India-forums.com. Addiction at its best. Hi, this is Sukiti and you're watching me on India Forums. Hi, this is Vivian and you're watching me on India Forums. ये कहानी मैं आप सबको नहीं सुनाऊंगी। मेरे को लगता है स्लॉट लकी वकी नहीं होता, शो लकी होता है। और अगर शो अच्छा हो तो लकी होता है, नहीं होगा तो अगली बार आप मुझे इसी कैमरा और माइक के साथ पूछोगे कि आपको क्या लगता है आपका शो क्यों नहीं चला। आई वॉन्टेड फना, बिकॉज इंसान जब किसी और पे फना होता है, इट्स ऑल अबाउट दैट। बट नहीं मिला तो प्यार की एक कहानी। हाउ डिफरेंट, हाउ गुड यू सी। हैप्पी बर्थडे बिग बी। Hi, I'm Pia. I'm Sukirti and I'm a very positive girl off screen and on screen. Pia एक बहुत प्यारी सी लड़की है जो she comes from a very small town and she comes to Dehradun और she's very positive, बहुत young है, college going of course she has to be young when she is college going and that's when एक थोड़ी सी love story evolve होती है और क्या वो love story है, this show is about unraveling that. Hi, I'm Vivian. I'm playing Abhay Raichan and Abhay Raichan is a mysterious guy. Everything उसकी हर एक चीज़ में मिस्ट्री है. अगर वो मानो एक रोड पर चल रहा है, there's a mystery why he's walking on the road, and of course he's got some supernatural powers, which is the show based on, and that's it. I think you can define him in two words. Can I ask one thing? Yeah. Does Abhay have supernatural powers to deliver chocolate? Yeah, I So he think, comes to know that I need chocolate and get me chocolate. Can you do that? I think Suku, I get you chocolates every day on the set. What a liar! He never gets एक भी chocolate नहीं देगा. Lie, don't lie. Dark is a very big word, It can be dark when you're in a triangle love story. It can be dark if you're in love with a married person. It can be dark if you're in love with somebody elder to you. There's so many things to define that. So taking one concept, we have made this, But saying that it's a dark love story, a lot of time there's a lot of passion, but because of X, Y, Z reasons, you can't show it. That's when the darkness seeps in, There's a reason behind it. So that is the explanation to this dark word. It's not that we didn't shoot it without light or there's some evil thing in it. All this is stupid. I think the darkness defines the intensity, the passion that is there in the love. That's why it's dark. See, I have not just done Dil Mil Gaya, I did Agle Janam after that. So I think people like me in that also. Yeah, on Star One I completely believe it. But अब एक एक्टर जिंदगी में एक ही एक्टर के साथ तो काम नहीं करता है ना. But I think the look is different, the concept is different there. I was very subtle, like a very straight hair, Ridhima, Here I am more like a very positive, little more chirpy, nice college going. The attire is different, my nature is different, obviously my co-actor is different. So everybody develops their own kind of chemistry. I'm sure people love what we do and will appreciate what we do. And definitely we will make our own fans, we'll make our own memory. Reviews तो promo के काफ़ी अच्छे रहे हैं. I mean, people have liked the promo, even the first and the second promo, both. And people are trying to understand, and later on they'll understand the entire thing when they watch the episode, that what's the mystery behind this show, why it is called a dark love story, why this guy moves so fast, and certain things. I would like to tell them that I completely love them. They've been with me through everything. When I was in DMG, when I moved to Agle Janam, when I'm back to Star One. So I completely love all of them and thank you for being there for me. Please watch the show because we're trying to do a really nice job. We've overwritten the script I don't know how many times. So please watch it and please make me proud of you. Thank you. I'm really thankful for my fans who've been watching my show, and it's a humble request. Please watch this show. We've worked very, very, very hard on this show, and as Sukiti said, we've worked very hard on the scripts as well. So please watch it. बात ये कि हम अपना काम कर सकते हैं, अपना शो बनाते हैं, यंग लोगों के लिए शो बनाया है, एक इंटरेस्टिंग एंगल है, थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा फन है, कॉलेजी है, एक्साइटिंग बहुत है शो मुझे लगता है, और केमिस्ट्रीज आर वेरी अलाइव. तो मुझे लगता है कि यंग ऑडियंसेस को मेरा शो, ये वाला शो तो बहुत पसंद आएगा. आई एम क्वाइट श्योर एक्चुअली. आई थिंक ऑडियंस कभी भी कोई भी जॉनर से कुछ महीनों बाद बोर हो जाती है. कोई भी स्टोरी उस जॉनर से, आई मीन एक्चुअली एवरी स्टोरी शुड हैव इट्स ओन एज टू इट, इट्स ओन पिच.
जब तक वो नहीं होता तो आई थिंक अगर आप 15 स्टोरीज भी एक ही जॉनर के बनाए बट आप उसे एक अलग प्रेजेंटेशन दे तो चलेंगी, और अगर आप सेकेंड स्टोरी इफ इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट वन तब नहीं चलेगी. सो दिस इज अ वेरी बिग मिथ कि ये टाइप का शो नहीं चलता. कोई भी शो कोई भी टाइप का चलता है अगर शो अच्छा हो. आई बिलीव लव स्टोरीज हैव टू बी अ बिट डार्क, यू नो, एंड आई थिंक आई लव द कैरेक्टर ऑफ है. आई थिंक एनी गर्ल विल फॉल इन लव विद हिम, but he's so wrong that it's so easy to fall in love and all women love bad boys. I kept asking for more time and kept begging them कि मुझे 1 महीना और दे दो, 1 महीना और दे दो प्लीज़. और I kept rewriting it because बहुत टफ था इस शो को लिखना. मतलब कि आपको पता नहीं, ये ऐसा एंगल है कि अगर ये रॉन्गली लिखा जाए ये शो में तो टोटली, और सुपरनैचुरल एलिमेंट के साथ लव स्टोरी लिखना जो सुपरनैचुरल नहीं बने. यू नो, आई एम नॉट मेकिंग अ सुपरनैचुरल शो, सो आई एम मेकिंग अ एजी लव स्टोरी. कैरेक्टर की का प्रॉब्लम उस लव स्टोरी का प्रॉब्लम है, बट लव स्टोरी इज एज यंग एज फन एज इट कैन गेट. सो वो कॉम्बिनेशन, वो मसाला, वो राइट मसाला बनाना बहुत टफ था. This show is about falling in love with someone who probably would not even fit into your imagination, and how that takes you to a totally new and interesting journey of your logic pulling you back and your instinct pulling you towards someone, you know. देखिए, Twilight, Vampire Diaries, True Blood, ये सारे shows एक supernatural element के साथ एक fiction drama बनाने की कोशिश है. तो अगर आप वो element पकड़े तो you can see there's a slight similarity because everyone, a lot of American television, Indian and American shows have done it, but we've done it in India also many times before. We've taken a supernatural element and made proper fiction out of it. This time it's not just a supernatural show, it's a supernatural element in a love story. Star One के साथ मेरा पुराना रिश्ता है. मैंने एक शो किया था इनके साथ, क्या होगा निप्पो का, which did very very well on Star One. And I mean, if you ask me, I love working with Star One because it's a young team, fresh team, energetic. I think और क्या चाहिए होता है एक प्रोडक्शन हाउस को एक चैनल के साथ काम करने के लिए. इतना अच्छा और बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अरेंज किया है, इतना एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म दिया है. अभी हमारा काम है शो बनाना और अच्छा बनाना. आई बीन मेकिंग कहीं तो होगा. आई मेड, if you ask me, Kusum was a lot like Cinderella. I've made कैसा ये प्यार है. I've made, in fact, most Kasautis in the Geek. So all these shows have actually been love stories. It's just that mostly people have decided to label me as a Saas Bahu producer. So be it. I live with it. नवरात्रि की शुभ अवसर पे हमारे सारे चैनल के सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बेस्ट विशेस. में आप अपने प्रांत में जैसे सेलिब्रेट करते वैसे करें और इन्जॉय करें, बिकॉज़ ये हम हिंदुओं का सबसे प्यारा त्यौहार है.